Hi guys, in the previous video we have completed our phase 3, that is monitoring stuff. We have seen how to visualize our metrics in a Grafana dashboard and how to connect and how to visit the Grafana and Prometheus services. So this video is the starting of the phase 4. In this phase we are going to cover some important stuff that we know don't need, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक हमारी प्लेलिस्ट में. बट दीज थिंग्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इन द इंटरव्यू पर्पस it is very important. So till now what we have done, let's take an overview. We created a Next.js application. We have built a, इसमें बन ही नहीं पा रहा, उसकी हमने इमेज बनाई, डॉकर इमेज. फिर हमने उसको पुश किया डॉकर हब पे. ये काम हमने ऑटोमेट कर दिया वाया CI/CD पाइपलाइन यूजिंग गिटहब एक्शन. देन वी मेक आवर EKS क्लस्टर भी हमने सीखा, क्लस्टर क्या होता है, आर्किटेक्चर सीखा. देन वी क्रिएटेड सम Kubernetes resources. Then we exposed our Next.js app to the internet. We have exposed it. Then what we have learned? We have learned to don't change manually. हमको manually change ना करनी पड़े इमेज. So we have automate the whole thing by using Argo CD. So no manual needed of like kubectl apply this, scale कर दो हमारे pods. ठीक है, ये भी हो गया. फिर हमने अपनी Next.js के मैट्रिक्स को एक्सपोज भी कर दिया. फिर हमने उस मैट्रिक्स को विजुलाइज भी कर लिया डैशबोर्ड्स में, ग्राफाना डैशबोर्ड्स में. ग्राफ्स, मल्टीपल ग्राफ्स भी बनाए हमने. सो इट्स दैट वी हैव डन सो फार. So in the Next.js application there is one important thing. When you currently our Next.js application is just a template. If you can see, if I go to, that's our application for now. I am not going to build a massive full product software. मैं कोई SaaS application नहीं बनाने वाला हूँ. I am just telling you, when you build the project, whole project, you will need some variables to store. That variables used in your APIs, like the database URL that you have to store your data. Something, if you are working with AI, you need some API keys like OpenAI API keys. Let's say Gemini API keys. If you are using some OS services like Clerk, to Clerk API key, Clerk secret. There are, it's a, these are what environment variables जो कि इम्पोर्टेंट है हमारी ऐप को चलने के लिए. एंड वी कांट पुश देम टू द गिटहब, बिकॉज अगर हमने ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स अपनी ऐप के साथ गिटहब में पुश कर दिए, सो एनीबडी कैन रीड योर डेटाबेस यूआरएल एंड कुछ भी कर सकता है उसमें, वो कुछ भी अटैक कर सकता है, आपका डेटा चोरी हो सकता है. सो आपको कभी भी, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो कि अपनी .env फाइल गिटहब पर ही पुश कर देते हैं. सो what we are going to learn in this current video,
That's the Kubernetes resource, that is config maps and secrets. These are same like the .env file that we store our environment variables in a file in development phase. In production we don't store our environment files like this. हाँ वो होंगे पर we don't push it to the GitHub repo online public हम उसको नहीं करेंगे. Config maps and secrets. What are these? These are, you can say it like it's for storing the environment variables. It is true, but अगर definition पे जाए तो what are ConfigMaps? It's a storage where we store some key value pairs. हम सीधे ऐसे डेफिनेशन में नहीं बोल सकते कि it's used to store the environment variables. We store some key value pairs after creating when they will get stored. हमने पढ़ा था इसके बारे में in the Kubernetes architecture video. In the control plane there's one thing called etcd where these config maps and secrets are stored. And how can a pod access these secrets? Via the requesting to the API server. API server etcd पे रिक्वेस्ट भेजेगा, etcd वहाँ से इनको अपने सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स देगा, फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल से रिस्पॉन्स पॉड्स पर जाएगा. दैट्स हाउ पॉड कैन यूज these variables, this data. So there's one important difference between secrets are also the same as storing the key value pairs. In secrets we also do the same, but in secrets we store the key and value in an encoded way. किस फॉर्म में एनकोडेड होते हैं? बेस 64. दैट्स द फर्स्ट डिफरेंस. एनकोडेड बेस 64. इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिक्योर हो गए. स्टिल यू कांट पुश दिस सीक्रेट्स जो हम बनाएंगे secrets.yaml, वो आप गिटहब पे पुश ही नहीं कर सकते हो, जिससे हमारा जो आर्गो सीडी हमने बनाई है हम अपनी ऑप्स रिपो में इसको पुश ही नहीं कर सकते. तो आर्गो सीडी उठाएगा कैसे? फिर हमारे पॉड्स फेल हो जाएंगे. सो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हाउ टू एनक्रिप्ट देम फॉर. बट Kubernetes एनक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करता है. Kubernetes जस्ट प्रोवाइड दिस एनकोडेड. बेस 64 में एनकोडेड प्रोवाइड करता है बस, कि आप एनकोडेड वैल्यू डाल दो, Kubernetes डिकोड कर देगा. अरे हम डाल भी दे, मान लो हमने पुश भी कर दिया तो कोई भी जाएगा बेस 64 डिकोड डाल देगा. दैट्स द फर्स्ट लिंक. यहाँ से कोई भी वैल्यू उठा लेगा. हम मान लो हमने secrets.yaml पुश कर दी गिटहब रिपो में, वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देगा, वो डिकोड होके डेटाबेस URL आपका आ जाएगा. सो secrets भी कोई ज़्यादा सिक्योर्ड नहीं है. दीज आर जस्ट एनकोडेड. Kubernetes only supports encoded base 64 encoded secrets. And the second thing is we store the data, the key value pairs that are non volatile, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. लेट्स से आपका कोई क्लर्क सीक्रेट है, बेटर ऑथ सीक्रेट है, वो हम कॉन्फिग मैप्स में डालेंगे. जैसे कि बकेट नेम है, बकेट रीजन है.
S3 bucket name, bucket नहीं bucket name, हाँ वो भी कोई ज़्यादा important नहीं. But in secrets we will provide things like that is more important, like AWS access key, AWS secret key. So that's why they are used. These are the basic knowledge about the ConfigMaps and secret. ज़्यादा deep में जाने की ज़रूरत नहीं है. Let's go to our cluster and see how to make them and how can we use, and then we see how can a pod is running in a worker node can access these config maps and secrets key value pairs. So let's see, मेरा cluster बना कि अभी ये बनना है. So let's wait. Our cluster is created. Let me clear it. Let me go to the K8s.yaml files. So let's create what? First configmap.yaml. I for insert. API version is v1. In what Kubernetes version it is introduced? v1. No groups are there, just a version name. Like सर्विस का भी v1 ही होता है, pod का भी v1 होता है, डिप्लॉयमेंट का apps/v1 होता है. apps क्या है? एक ग्रुप नेम है उसके अंदर. kind what are we making? config map metadata name, let's say next config, in which namespace we are going to run in this, in the next namespace. Now the next thing is what's the data inside this config map, and here we will provide like key value pair, or let's say bucket region. इधर आपको कोई कैप्स लॉक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हो इधर नेम, जैसे हम लिखते हैं ना ऐसे. in .envs we write like this: process.env.aws bucket name. We will write it but not here. Here you can write anything as you want, you can give any structure. Let's say what's the bucket region? US East 1, कुछ ऐसे ही ले लेते हैं. That's our key value pair. You can create more also, like auth secret. It's some कि ये ऐसे वेरिएबल्स हैं, ऐसा डेटा है जो लीक भी हो जाए उससे हमें कोई फ़र्क, आप इस डेटा को ऑनलाइन भी पोस्ट कर दो गिटहब रिपो पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इससे कोई क्या ही कर लेगा, बकेट रीजन ना जान के, US ईस्ट 1 जान के कोई क्या हैक कर लेगा, ऑथ सीक्रेट से क्या ही हैक कर लेगा वो. So let's apply it. क्यूब सीट, पहले हमको अपना नेम स्पेस अप्लाई करना पड़ेगा. apply -f namespace.yaml. Our namespace has been created. Let's apply our config map file. Config map, next config created. Now how to use inside a deployment?
Let's go to our deployment. As you can see, inside below this container port, inside in this containers, write env. What's the name? It's env. There can be multiple environment variables. Now you can give the structure of caps lock वाला इधर दे सकते हो आप. auth secret value from, किधर से वैल्यू उठानी है, config map key ref, config map key ref. config map का हमें नेम देना है. कौन से config map में था? next config, that is, and what's the key? It's the auth secret. Now when this deployment will run, when the pod will run, so this auth secret variable will used inside this container, and the value of this secret will be pulled from this next config, and the key is auth secret में से वो वैल्यू उठा लेगा. लेट्स से हमारे पास एक और है इसी लाइन में ना, नेम. दूसरी क्या थी हमारी वैल्यू? बकेट नेम. लेट्स से AWS bucket name value from config map key ref name next config, and what's our key inside this config map? The key is bucket name, I think so. We will check it. So that's how you can pull your config map environment variables and use them inside your pod. Let me confirm the bucket name variable. It's bucket region, not bucket name. Let go back to your deployment. I to insert, it's the bucket region, not bucket name, and bucket region. Escape colon WQ. Now kubectl apply -f deployment.yaml. You will see our deployment created. kubectl get pods. Our pods are running. Let's see secrets. Let me create a secret.yaml. I for insert. Same API version as config map v1. Kind, what are we making? Secret metadata. Let me check my audio recording or not. Everything is fine. Let's secret in which namespace? Next. What's the data? क्या डेटा हो सकता है इधर? Let's say OpenAI API key. That's our secret OpenAI.
एक ही बहुत है, बार बार क्या ऐड करना. Escape, same structure as config map, just the kind changes. Escape colon WQ, go back to your deployment, come inside your env and add a environment variable name. What's the name? OpenAI API key. वैल्यू फ्रॉम, कहाँ से उठानी है वैल्यू. That was config map key ref, so it was secret key ref obviously. In which secret? What's the secret name? Next secret. What's the key inside the secret? On OpenAI API key. That's how the pod can use the, not pull, use the secret OpenAI API key, so called secret. Array, we have made a mistake, sorry. Go to your secret.yaml again. We don't provide the hard value here, we provide the base 64 encoded. I forgot. Let me come to the, बाहर आता हूँ. Write a command echo /n. Make sure you write this -n. It don't add the new line like this. Let's say this is OpenAI secret API key. ऐसे नहीं लिखते गए. OpenAI secret key encoded into base 64 form. Now this value we will store inside the secret.yaml. Copy this, go to your secret.yaml, and I for insert, escape :wq. What we store here in secret file, the base 64 encoded, kubectl apply deployment.yaml, our configured kubectl get pods, create container config error. क्या एरर आ रहा है? डिस्क्राइब करो भाई. डिस्क्राइब pod. Next secret not found. नेक्स्ट सीक्रेट कैसे नहीं मिला भाई? अरे सी, यू हैव टू सी द लॉग्स. आप जब तक एरर ढूंढोगे नहीं, आपको एरर मिलेंगे कैसे? आप एरर फिक्स करना कैसे सीखोगे? वी हैवंट अप्लाई आवर सीक्रेट फाइल येट. Secret is created.
Now we have to apply the our pods are running fine and our secret is also created. So now what's the thing left? There's one thing left only in this video. If you want to store all your environment variables in a secrets and ऐसे नहीं X खाली ड्रॉ में समझाता हूँ. In Next.js what you have a environment.env file that contains all your key value pairs equal to ये database equal to ये. So now what you can do, you can convert this whole env file and encode it into the base 64. Yes, you can do it. And after encoded, in the deployment, volume mount your environment variable inside your container inside /app workdir. जो वर्कडीर बनाई थी हमने डॉकर इमेज में, you can same to same create a file .env and your app will use the variable from this .env file. Let's come here, base 64 and code. Generally आपको करना नहीं चाहिए. These website can steal your information. Let's say your database URL Postgres कुछ भी डाल दो 1 2 3 4 5 ऐसे ही होता है ना. ऐसे ही कुछ होता है .localhost 5432/mydb something like that. Say Gemini API, Open API AI API key. Now you can encode this whole file. Click on encode. You will get this encoded value. Copy this, go to your terminal, open secrets.yaml, I for insert, now you can provide a whole .env file as a secret, as a key and a value. So that's our new secret. We have encoded our whole .env file and store it as a key. .env लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. How can we use this? Let's say come to your deployment, remove the secret,
We don't need anything all of it. अब हम environment variable नहीं दे रहे हैं. You can delete your config map also. We will delete it. Now here we will write volume mounts. Name environment file, read only, true. If you don't know about volume, I don't want to make a video about volume and PVCs because I don't use them generally. If you want, let me know in the comments. If you want a specific video about volume mount, volumes, PVCs, persistent volume. Why you use them volumes? Generally for the if you host a database inside your cluster, database self-hosted, I don't like them. I like the hosted database like NeonDB. In self-hosted database, you have to do extra work by yourself. ज़्यादा झंझट है उसके. बैकअप भी करो उसमें, टाइम टू टाइम वॉल्यूम माउंट भी करो. Now you have to give mount path. हमको किधर app, what is slash app? It's our working directory that we have made during the Docker image when we are building the Docker image. Inside this .env. Now what this will do, if you leave it like this, it will replace the whole thing inside app working directory and make a .env file. It will remove all of your files inside this. ये सारी रिमूव कर देगा वो, जितनी भी हमारे डॉकर इमेज डॉकर कंटेनर में फाइल है वो सारी रिमूव कर देगा. So to overcome from this problem, we add a sub path that is very important. कोलन नहीं दिया क्या? सब पाथ राइट .env की इसकी अलग से फाइल बने. इसमें माउंट पाथ सब पाथ वो ऐप के अंदर एक नई फाइल बना देगा .env एंड इट विल स्टोर ऑल ऑफ योर वेरिएबल्स. अभी ये स्टोर नहीं हुआ है, अभी ये खाली फाइल बनी है. नाउ कम टू दिस कंटेनर्स लाइन in this syntax. राइट हेयर वॉल्यूम्स की हमें क्या स्टोर कराना है उसमें. ऐड अ नेम environment file. What's the secret name? What's the secret name? It's the next secret. That's it. The name should be the same, this and this. Now our whole .env file encoded inside the secret and we are using inside our container. If I skip :wq, first let me delete the config map. It will delete file config map. It's deleted. Now apply the secret. Now apply or reapply or deployment. Configured kubectl cat pods.
Pods are running. If I go inside this pod, kubectl exec interactive mode pod slash this inside the namespace next. As such, we are inside our work directory ls lsa. So you can see our .env file has been created. हमारी इमेज में कोई .env फाइल थी नहीं. If I write cat.env, you can see our environment variables are stored. So yeah, that's it for the video. How to exit from this. Exit. Tomorrow we will see how to encrypt our secrets.yml. Currently you can't push this into your repo, and argo cd हमारा अभी ऑटो डिप्लॉयमेंट अभी बचा है. You can't push this to your ops repo. Everyone can see this .env encode base64 encoded form, and go to the browser, and everyone can push inside this and decode. You can see our environment variables are exposed. That is generally not a good habit. So in the next video we will see how to encrypt them. एनक्रिप्ट में तो कोई भी हैक नहीं कर पाया, उसको 10 जन्म लग जाएंगे. So that's it for the video.